Hello, so today we are going to make oatmeal cookies, sugarless oatmeal cookies. तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या ड्राई इंग्रेडिएंट्स चाहिए. फर्स्ट cinnamon, सेकंड vanilla extract, इलायची और oats plus आटा. Let's go into it. पम पम पम. अब मैं आपको बताती हूँ वेट इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं. तो बेसिकली इसमें चाहिए दूध, जैगरी पाउडर और बटर. जैगरी पाउडर मतलब गुड़ का पीसा हुआ पाउडर. मिक्स इट वेल. ठीक है. आपको दिख रहा है मेरा मिक्सचर. परफेक्ट. अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स और वेट इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स कर देंगे. Let's do this. मिक्स 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 मिक्स. अच्छे से मिक्स करना है, प्यार से मिक्स करना है एंड बैम. नाउ माय फेवरेट, nuts. Let's go nuts on the nuts. बहुत सारे almonds और oh, like I think that is what I added and more mixing. Okay, I personally love nuts, but it's up to you. The dough is ready. और अब हम इसे oven में रख देंगे. It doesn't even need to be a perfect brown, right? So I place it in the oven, preheated it at 180 degrees Celsius. Now it's about to go in for 22 minutes. 5, 4, 3, 2, 1. Yay! Okay. How do they look? Crispy and warm. Honestly, I enjoyed them so much. मुझसे ज़्यादा मेरी family. So enjoy. I hope you like it.